अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे अल्फाज सीखने वाले हैं जो शायद ही आपने पहले कभी सुने हो। आई बैट यू डोंट नो दीज वर्ड्स। यस, आई बैट यू डोंट नो दीज वर्ड्स। ट्रस्ट मी। So let's get started. The first word written on your screens is bodacious. Bodacious. और bodacious का मतलब होता है excellent, admirable or attractive. Excellent, admirable or attractive. और इसकी एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पे लिखी है, It was a bodacious performance. It was a bodacious performance. Bodacious. Next word is brouhaha. Brouhaha. A noisy and overexcited reaction or response to something. A noisy and overexcited reaction or response to something. For example, there was a lot of brouhaha over his statement. There was a lot of brouhaha over his statement. Brouhaha means a noisy and overexcited reaction or response to something. Another word is phalanges. Phalanges. Phalanges का मतलब होता है a body or troops of police officers standing or moving in close formation. आप देखते होंगे कि कभी-कभी मास को रोकने के लिए पुलिस या फौज जब एक कतार में खड़े हो जाते हैं तो उसको हम कहते हैं phalanges, राइट? इसका सिंगुलर होता है phalanx, जबकि यहां ये प्लूरल फॉर्म है phalanges. For example, 600 marchers set off led by phalanges of police. 600 marchers set off led by phalanges of police. Another word is canoodle. Canoodle. जी हाँ, ये नूडल से मिलता जुलता वर्ड है एंड दिस इज अ वर्ब. ये वर्ब के तौर पे जुमले में इस्तेमाल किया जाता है canoodle, और इसका मतलब होता है to kiss and hug. To kiss and hug. The couple canoodled before departing. The couple canoodled before departing. इसकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म के लिए हमें सिर्फ डी का इजाफा करना है. Another word is bamboozle. Bamboozle. और bamboozle भी वर्ब के तौर पे इस्तेमाल होता है और इसका मतलब होता है to cheat or trick someone. To cheat or trick someone. For example, he had bamboozled many people before being arrested. He had bamboozled many people before being arrested. अरेस्ट होने से पहले वो कई लोगों को चीट कर चुका था. And there is one more word written on your screens, malarkey. Malarkey. और malarkey का मतलब होता है meaningless talk या nonsense. Meaningless talk या nonsense. For example, everything that politicians say is malarkey. Everything that politicians say is malarkey. And yes, here is the word which I have been using for a long time in my conversation, and that is Nincompoop. Nincompoop. और इसका मतलब होता है foolish or stupid person. A foolish or stupid person. For example, you better stop acting like a nincompoop. You better stop acting like a nincompoop. And the next word is badger. Badger. और badger भी verb के तौर पे इस्तेमाल होता है. It means to repeatedly ask someone to do something. To repeatedly ask someone to do something. जैसे कि हम एक वर्ड pastor यूज करते हैं. pastor का मतलब थोड़ा सा डिफरेंट है कि pastor का मतलब होता है सवालात कर करके परेशान कर देना, जबकि badger का मतलब होता है to repeatedly ask someone to do something, किसी को बार बार कोई काम करने का कहना. For example, I had to badger him into coming with us. I had to badger him into coming with us. And the next word is Gubbins. Gubbins.
और Gubbins का मतलब होता है miscellaneous items or necessary items. Miscellaneous items or necessary items यानी कि छोटी छोटी चीजें जो किसी भी काम को करने के लिए जरूरी होती हैं उनको हम Gubbins कहते हैं. For example, every home should have Gubbins for any indoor work. Every home should have Gubbins for any indoor work. यानी कि घर के अंदर किसी भी छोटे मोटे काम के लिए जो छोटी छोटी चीजें और आइटम्स हमें रिक्वायर्ड होते हैं वो हर घर में मौजूद होने चाहिए. One more word written before you is gnarly. Gnarly. And gnarly एडजेक्टिव के तौर पे यूज होता है और इसका मतलब होता है difficult, dangerous or challenging. Difficult, dangerous or challenging. For example, we should learn to face gnarly situations in life. And yes, it's very true. We should learn to face gnarly situations in life. किसी भी किस्म की डिफिकल्ट, डेंजरस या चैलेंजिंग सिचुएशंस को फेस करना हमें सीखना चाहिए ताकि हम जिंदगी में किसी भी ऐसी सिचुएशन को, gnarly सिचुएशन को फेस कर सकें. एंड द लास्ट वर्ड फॉर दिस वीडियो इज गॉगल. आपने गॉगल वर्ड वो ग्लासेस के लिए तो सुना होगा, बट हियर वी आर यूजिंग दिस गॉगल एज अ वर्ब. ये वर्ब के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है और उसकी मीनिंग है टू लुक विद आईज वाइड ओपन, टिपिकली इन अमेजमेंट. यानी कि आंखें फाड़कर हैरत का इजहार करना. गॉगल. फॉर एग्जाम्पल, आई गॉगल्ड एट देम इन टोटल डिसबिलीफ. I goggled at them in total disbelief. I hope, my dear students, you must have liked today's video and you must have learned so many new words today. We will meet again in another new video. Till then, take very good care of yourselves. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.